Hello everyone, my name is Akshay and this is day 67 of our GFG POD streak. तो देखते हैं आज के क्वेश्चन को एंड वी विल डिस्कस सम फ्यू थिंग्स एट लास्ट. तो आज के क्वेश्चन का नाम है कंटेनर विद मोस्ट वाटर, मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है एंड वी हैव दिस क्वेश्चन एज given n non-negative integers a1 a2 till an where each represents a point at coordinate I comma ai. So the first number that is 1 here, it represents a coordinate, the index comma the value there, like 0 comma 1 it's the first coordinate. For the second input, 1 comma 5 is the second coordinate. So n vertical lines are drawn such that two endpoints of line I is at I, like I comma ai and I comma 0. Okay, so find two lines which together with the axis forms a container such that it contains the most of the water. In single case, vertical line will not be able to hold water. Okay, so we have this 4 here and 1543. The output is 6, saying that 5 and 3 are distance 2 apart. So the base height, so the length of base will be 2 and height of container will be the minimum of it because हमें water store करना है, else it will overflow. So the total area is 3 to 2 is equal to 6. Let's go to the paint और देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है. तो मैंने पहले से यार ये एक डायग्राम बना रखा है ताकि हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े. So what it was saying कि हमारे पास elements है 1, 5, 4 and 3, right? So 1 actually represents the index 0, 1, 2, 3, the index comma the element at 0th index and that represents a coordinate. Similarly 5 के लिए 1, 5, 4 के लिए 2, 3 and 3 के लिए 3, 3. Now what it was saying कि हमें ये points मिल गए, उसे mark कर लो and then you have to I, 0. So we have this one coordinate at I, 0, that will be 0, 0, that will be 1, 0, 2, 0 and 3, 0. हमें यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, राइट. सो यू कैन सी दैट हमने पॉइंट्स तो मार्क कर लिए 0, 0 और ये 1, 5, दिस इज 2, 4 एंड दिस इज 3, 3. तो अब 0, 0 पे हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, दैट मीन्स दिस लाइन, राइट. दिस लाइन आई ड्रू एंड दिस इज द लाइन, दिस लाइन आई ड्रू, दिस वन, right. So that is the line that is pointing to 1, 0, right. 1, 0. Similarly this is a 2, 0, this is 3, 0. ठीक है, हमें निकालना है मैक्सिमम एरिया इट कैन होल्ड. तो हम क्या करते हैं यार, ब्रूटली अगर हम सोचे कंस्ट्रेंट की तरफ चलते हैं. 10 पावर 5. ओके, तो 10 पावर 5 में वी कैन नॉट यूज एन स्क्वायर, हम नहीं यूज कर सकते. वी कैन यूज एन log n, we can use n, these are the complexities. ठीक है, तो अगर हम OA में होते तो हम डायरेक्ट n log n या n से सोचना शुरू करते, बट सिंस आई एम मैं बता रहा हूँ सबको कि हाउ वी कैन अप्रोच अ प्रॉब्लम, तो हम ब्रूटली सोचना शुरू करेंगे यहाँ पे विदाउट टेकिंग द इररिस्पेक्टिव ऑफ कंस्ट्रेंट. तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक पिलर है, राइट, एक पिलर है एंड हम इस वन पिलर से मैं ये दो पिलर कितना वाटर होल्ड कर सकते हैं, ये दो गैस कितना होल्ड कर सकते हैं, ये दो कितना होल्ड कर सकते हैं, ये निकाल के सिमिलरली सारे एडजेसेंट पिलर का मैं निकाल लूँगी कितना वाटर होल्ड कर सकते हैं और उनमें मैं मैक्स ले लूँगा, राइट. तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ. सो व्हाट आई कैन से कि फर्स्ट पिलर, दिस इज द फर्स्ट पिलर एंड सेकंड पिलर में कितना वाटर होल्ड हो सकता है. तो फर्स्ट पिलर व्हाट हैज इंडेक्स 0. सो 0 से 1 में हाउ मच वाटर कैन बी होल्ड, दिस वन, this thing, right. And suppose this is the ith pointer, this is the jth pointer, then I can say that if I multiply this a value with this what b value, right, then I can get कि water कितना hold होगा. तो I can say that a is actually what, j minus I, and for the b part I can say what कि b is actually the minimum of both towers, है ना, both let's say towers I wrote, and both towers का like value क्या है, array of j array of I, है ना. तो ठीक है, ये तो हो गया यार कोड पर्सपेक्टिव से, बट ठीक है अब ड्राइन करके देखते हैं कि 0 से 1 में वाटर होल्ड कितना हो सकता है, ये 1, राइट. सो आई विल राइट 1. नाउ 0 से 2 में कितना होल्ड हो सकता है, ये इतना पार्ट होल्ड हो जाएगा फिर, राइट, इतना पार्ट. सिमिलरली 3 के लिए ये तीनों ब्लॉक कंसिडर हो जाएंगे. ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए. तो 0 से 2 के लिए 2 हो जाएगा, 0 से 3 के लिए आई कैन सी 3, राइट. अब सारे पेयर्स, अब 1 से 2 के बीच में जो टावर है, राइट, दिस वर्टिकल लाइन एट पॉइंटिंग एट 5 एंड दिस वर्टिकल लाइन, राइट. सो व्हाट आई कैन से दैट यहाँ पे क्या हो सकता है कि आई कैन चूज दिस मच एज अ कंटेनर, है ना. मैं ये कंटेनर बना सकता हूँ विथ एक्स एक्सिस, उन्होंने बोला था बनाने के लिए, तो ये एक कंटेनर हो सकता है यूजिंग दिस 2 टावर. तो मैं इसकी एरिया में क्या देख सकता हूँ कि 1, द बेस इज 1 एंड द हाइट इज 4, सो आई कैन राइट 3, राइट. और ये किसके लिए था, ये 1 से 2 के लिए था. सिमिलरली 1 से हम 3 के लिए देख लेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 से 3 के लिए आई कैन सी दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, सो दिस विल बी 2 into 3 दैट इज 6, राइट. तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ. सो 1 से 3 से 6 हो जाएगा. सिमिलरली 2 से 3 लास्ट हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इट कैन बी दिस वन, राइट, दिस वन. तो इसके लिए मैं क्या देख पा रहा हूँ कि बेस जो है वो 1 है
2 से 3 के लिए 6 था, तो बेस जो है 2 से 3 के लिए बेस जो 1 है एंड द मिनिमम height is 3, so it will be 2 से 3 के लिए 3, but I can see the maximum amount of water is here at the 6 point, so we can consider all the pairs, है ना. हम एक ith pointer लेंगे that will be from like 0 to less than n, and then nested loop होगा that will be I plus 1 to j less than n, and we will consider all the possibilities of a comma b, है ना, something like a comma b, something like मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, something like max of let's say answer comma a into b. A is what? The area of a rectangle, and a is pointing to what? J minus I already explained you that, and b is pointing of, b is the pointing of array of j comma array of I is minimum of this two, right? तो चलो इसको कोड कर लेते हैं, but if we code this solution तो हमारा टेस्ट केस तो पास होगा, right? But since this complexity is O of n square, that is 10 power 5 का square, that will give us 10 power 10, that will give us 10 power 10, which is greater than 10 power 8. So we will, what we'll get here, if we code this solution, we will get TLE. TLE मिलेगा. तो let's verify this thing and we will then go to the next part. तो ये कोड बहुत ही सिंपल है यार, मैंने ऑलरेडी सूडो कोड दे लिखा है, 2 फॉर लूप चलाना है एंड देन इसमें स्टोर करना है मैक्सिमम को, राइट. सो लेट मी जस्ट राइट दिस कोड एंड देन आई विल रिज्यूम द वीडियो. So I have written the code, the same thing, the two nested for loop as I was mentioning कि हम सारे adjacent pillars का हम देख रहे हैं कि कितना water store कर सकता है वो, ठीक है. And we were taking among all the possibilities कि max किसके पास है, a star b. A was pointing to the base thing, base was the j minus I, right? And the height of the pillar will be the minimum of the pillars. Minimum क्यों ले रहे हैं यार? अगर हम minimum नहीं लेंगे, अगर हम मिनिमम नहीं लेंगे, लेट्स मी गो टू हियर, अगर हम इन दो पिलर को कंसिडर कर रहे थे, दिस वन एंड दिस वन, अगर हम मिनिमम नहीं लेंगे, राइट, हम ले लेंगे अगर मैक्सिमम, तो फिर ये पार्ट ऑफ वाटर तो फ्लो हो जाएगा ना, ये बाहर चला जाएगा, इट विल नॉट फॉर्म अ कंटेनर, राइट. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द मिनिमम थिंग. एंड वी कैन, एंड क्वेश्चन ने कहा है कि यू कैन चूज टू एक्स एक्सिस with respect to this actual x axis and you can make a container. So that's why we are taking minimum. So let's compile and run this code and we will see that how it is responding. Okay, so there are some changes like मैं n और array हमेशा conventionally use करता हूँ arr, तो मैं उसको change कर देता हूँ, like आदत सी हो गई अब तो okay, comma, let's test this thing, compile and run. एंड ग्रेट, हमारा योर इनपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच कर रहा है, बट सिंस वो 10 पर 8 और लॉजिक 10 पर 8 और लॉजिक हमेशा होल्ड करता है कंस्ट्रेंट, मैं बार बार बोलता हूँ, इट्स नॉट फॉर टाइम पास. सो इफ आई हिट द सबमिट बटन आई विल गेट TLE. सो लेट्स जस्ट वेरीफाई दैट थिंग. Okay, so after 113 cases there are cases which are going over bound of 10 per 8 and that's why we're getting TLE. तो ये देखना बहुत जरूरी था. So अब हम इसकी efficient approach की तरफ चलते हैं. How can we solve it more efficiently, right? तो मैं सेम टेस्ट केस को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स से दिस वाज द थिंग, राइट. ठीक है, तो मैं क्या देख पा रहा था, मैं एक बार वो बना लेता हूँ. सो वी वर हैविंग दिस नंबर लाइन 0 1 2 3 4 and 5, right? Similarly 1 2 3 4 and 5. The points were this 0 comma 0 comma 1, then 1 comma 5, 2 comma 4, 3 comma 3. These were the points. So let's just mark it 2 comma 4 and 3 comma 3. हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे थे, तो ओके मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है. एंड दिस वाज 0 comma 1, दिस वाज द पॉइंट. सो ये हमारे पास था, ठीक है. तो व्हाट आई कैन सी कि इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग ऑल द पेयर्स, व्हाई नॉट वी स्क्वीज फ्रॉम बोथ दी साइड्स, है ना. हम चेक करते जाते हैं कि जैसे ही हमें कोई आंसर नहीं मिला तो वी विल राइट ट्रैवर्स ऑन द राइट और एल्स विल ट्रैवर्स ऑन द लेफ्ट. तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार कि लेट्स से इसके पीछे इंट्यूशन क्या है कि लेट्स से आई हैव दिस टेस्ट केस. मैं साइड में एक बार बताता हूँ इंट्यूशन क्या है एंड देन वी विल रन दी लॉजिक. मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से आई हैव दिस पिलर ऑफ 5, राइट, एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंटर F और लेट्स से L, द फर्स्ट पॉइंटर, and we have this pillar of let's say length 3 and we have this pointer H. एंड मेरे को पता है इंडेक्सेस जो है वो लेट्स से 0 से 4 तक है. ओके, सो व्हाट आई कैन से, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, सो दिस विल बी द एरिया, है ना.
तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके लिए मैं लिख सकता हूँ बेस में कैसे निकालूंगा, h माइनस एल से, राइट? I will be writing h minus l into the minimum of those pillars, that will be 3. If I calculate it, it will be 4 minus 0 into 3, that gives us 12, right? बट सपोज अब मैं बोल रहा हूँ अब मैं यहाँ से ट्रैवर्स करूंगा, मैं मेरा कहना है कि मैं अब इधर ट्रैवर्स करूंगा इफ वी हैव सम पिलर। किस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहा हूँ? जिस डायरेक्शन में आई गॉट मिनिमम पिलर। सो आई एम जस्ट राइटिंग वन थिंग, इफ नहीं, इफ नहीं, मैं लिख देता हूँ ट्रैवर्स फ्रॉम द साइड ऑफ मिनिमम पिलर लेंथ। मिनिमम नहीं, लोअर लिख देता हूँ, दैट मेक्स सेंस। लोअर पिलर लेंथ तो 3 की लोअर थी, तो मैं उधर से ट्रैवर्स करता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? तो मैं अपने पॉइंट को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, लेट्स से आई मेक अ वन मोर पिलर विच वाज एट दिस पॉइंट, विच वाज हैविंग द लेंथ एज 5, राइट? तो व्हाट आई कैन सी, और इसका इंडेक्स लेट्स से 3 था, है ना? तो व्हाट आई कैन सी सिंस आई हैव ट्रैवर्स दिस हियर, राइट, मैं क्या देख सकता हूँ कि नाउ h minus l will be 3 minus 0, right, and star minimum of 5, that will be 5, that gives us 15, right? I can see that I am getting an answer if I traverse left in the sense I am traversing from the side which has the lower pillar length, then I can see that I'm getting an answer which I may be getting an answer which may be the maximum from the previous answer, है ना? अब ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, मे बी गेटिंग द आंसर। राइट जाने से आंसर क्यों नहीं आएगा, है ना? राइट जाने से आंसर क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हमें पता है यार कि दिस इज द मिनिमम पिलर लेंथ, राइट? तो हम किधर जाएंगे? लाइक हमें इंडेक्सेस की जो ये है, हमें इसको ग्रेटर करना होगा, राइट? सो वी हैव टू मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन, है ना? ये कैन बी वन ऑफ द इंट्यूशन। सिमिलरली हमने एक साइड से देख लिया है, तो हम दूसरे साइड से भी देख लेंगे, है ना? और क्योंकि हमारा पॉइंटर जो है वो फर्स्ट पॉइंटर हमारा काम मेंटेन करेगा, यहाँ पे रहेगा एट द फर्स्ट ऑफ द एलिमेंट, एंड द लास्ट पॉइंटर विल बी एट द लास्ट। सो दैट्स व्हाई दिस इज द वे यू कैन स्क्वीज फ्रॉम बोथ द साइड एंड वी कैन डू दिस थिंग इन ओ ऑफ एन, राइट? तो ठीक है यार, मैं इस सेम लॉजिक को इस पर ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ ऑन दिस टेस्ट केस। सो लेट्स डू दैट पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस पॉइंटर, लेट्स से फर्स्ट और लास्ट, कन्वेंशन के लिए हम फर्स्ट और लास्ट यूज करते हैं। सो आई हैव फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर, राइट? एंड इफ आई वांट टू like in the maximum area thing, let's say we have a variable as maximum area, and here it will be like 1, 3 पिलर की लेंथ है, इनमें से हमें मिनिमम चूज करना है, राइट? तो मिनिमम चूज किया तो वी हैव दिस 1 इंटू बेस क्या है, l, f, so it will be l minus f, so it will be 3 minus 0, right? so this will give us maximum area of 3, right? मैंने क्या कहा था कि ट्रैवर्स फ्रॉम लोअर पिलर लेंथ, लोअर pl लिख दे रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पीछे चले जाऊंगा, राइट? नहीं सॉरी, हमारा लोअर पिलर लेंथ है, सो आई विल मूव इन द राइट मोस्ट डायरेक्शन। सो व्हाट आई विल डू दैट f इज इक्वल्स टू f plus 1, नाउ इट इज पॉइंटिंग एट 1 एंड h इज सेम एज पॉइंटिंग एट 3। सो अगेन वी विल अपडेट द मैक्सिमम एरिया। सब हमारे पास मैं पॉइंटर कहाँ पर मैं पहुंचा चुका हूँ, नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस वन एंड दिस वन, राइट? तो लेट्स सी, तो हमारे पास एरिया क्या हो गया, हमें पिलर क्या है 5, 3 है, राइट? इनमें से मिनिमम अगेन 3 है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ द basis value, like to 3 minus 1, that will be again l minus f, it will be 3 minus 1, that gives us 2, so this is 6। so maximum area को हमेशा हम अपडेट करते जाएंगे यार, पहले 3 था तो we got the bigger area, so we'll update it as 6, right? ठीक है, देन अगेन हमारे पास लोअर पिलर लेंथ कहाँ पे है, हमारे पास 5 and 3, so we will move this pointer, right? so what I can say, that is f is still pointing at 1, but the high pointer, the last pointer, let's say, uh, okay, so f and l tha, right? so let's make this as h, confusion now, h, so h now becomes as what, हम मूव कर गए थे तो it was 3 minus 1, that becomes 2, so again we will calculate the maximum area। so we will see that f of 1, the height was 5 and the array of 2, so its height is 4, right? Its height is 4, so 5 comma 4, the minimum will be 4, and star the h minus f, the base length, so it will be 2 minus 1, right? the actual h minus f, so it will be 4, right? so we will not update the max area, and हम फिर से लोअर डायरेक्शन में जो लोअर पिलर था उसके डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। so we will see that 4 is less than 5, so we will move again to the from lower to higher pillar length, right? ठीक है,
lower pillar length to let's say higher, मैं लिख देता हूँ to make more clear. हाँ ठीक है. So if I move this thing then f is still 1 but h is now 1, so we do not have to calculate, है ना. हमें सिर्फ एक पिलर, अब एक ही पिलर बचा हुआ है. How we will make a container from that? That was the last line of our question. If I just take you to the question for the quick recap, so you can see here that in case of single vertical line it will not hold water. बड़ी obvious सी बात है, कंटेनर बनेगी ही नहीं जब दो लाइन नहीं रहेंगे तो. So what I can do कि ये चीज तभी चलेगी, this will only run when let's say while f is less than h. I can write this thing while f is less than h. So, and we will do some things like ma will be equals to what, h minus f into minimum of array of h comma array of f, right. जिस डायरेक्शन में लोअर था, right. So I can write if array of what, if array of what, I can write if array of f let's say is greater than array of h, है ना. तो h is lesser, right. तो हम क्या लिख देंगे कि h is equals to h minus 1, है ना. We move towards the h to f because h was lesser. Else in the case, else केस में क्या हो गया कि f जो होगा वो छोटा हो जाएगा, तो we will move from f to h. So f is equals to f plus 1, right. So that's the pseudocode. I've explained you the pseudocode with the dry run. So now let's code it. I hope this is pretty clear to everyone. So now let's code it. The only logic was to traverse from the lower pillar to the higher pillar so that we can squeeze from both the direction to get our work done in O of n. Okay, so let's code it. So I will just reset my editor. Okay, I will say int. No, it's actually long. So I will say long. Long answer is equals to let's say 0. I will say a first pointer will be pointing at n minus 1. I will change the above thing as n and arr. And h is equals to n minus 1 actually. And f is equals to 0. The first pointer and the last pointer. Or let's say high pointer. So what I have to do, I will run only, I explain the condition, I will run only while L is less than H. So हमें क्या करना है, answer is equals to math dot max, right. और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए actually height, base into height, right. rectangle का area ऐसे निकलता है b into h. So for the b thing we can say simply say that calculate that h minus f, we can get the base from there. And for the height we have to take the minimum thing. I already explained, अगर मिनिमम नहीं लोगे तो फिर वो ओवरफ्लो का एरर आएगा. भाई पानी कैसे स्टोर होगा, राइट. कंटेनर तो बनना चाहिए. सो लेट्स से array of h comma array of f, and we have to compare it with the answer. Seems good to me. Seems good to me. Okay, so now I have to say if array of f is let's say is greater than array of h, then what we have to do, move from lower pillar length to higher. So what can you see, h lower है, right. तो उसे पीछे की तरफ मूव करना है. Like it was at left, we have to move towards the higher pillar length that was at right, नहीं left में था. So it will be h is equals to h minus 1. In else cases again we will do the same, but it will be f is equals to f plus 1. In this case the f was having the first pillar was having the lower length, so it has to move in the right direction towards the bigger pillar length, so it will be in the right direction, so it will be f equals to f plus 1. I hope you're getting this logic. In the end we just have to return the answer variable, and let me make some changes here. It will be int n, okay, and it will be int array. So let's hit the compile button. Okay, so I have made a pointer as f, not l. Great. So let's just hit the submit button, and it's time. Okay, let's just hit the submit button as of now. So once it gets submitted, we will do a code walkthrough and we'll talk about the summary. So finally it gets submitted. So that's great. So time complexity is ki ho gayi O of n, right? And what will be the space complexity? We just use some variables, so that will be O of 1. So quickly say code walkthrough.
मेरे ख्याल जरूरत नहीं यार, वी जस्ट मेड अ लॉन्ग आंसर फॉर। तो मेथड वन में था यार कि वी वर कंसिडरिंग द ऑल पेयर्स, राइट? मेथड वन में था कि वी वर कंसिडरिंग द ऑल पेयर्स। इफ आई जस्ट गिव यू मेथड वन, इट वाज ओ ऑफ n square, right? All pairs. Method two, to squeeze from both the direction, squeeze, right? And this was the logic, traverse from lower to higher parallel. So it was O of n into O of 1. So this was the whole logic, and you can see the code here. So मिलते हैं यार अब कल के POT history के day 68 में. And few last things that you can start and fork my DSR repository. I'll mention that link in the description to get help with the source code as well as the syllabus. तो finally आज 27th of December है, तो मैं अब अपने Google Form का रिस्पॉन्सेस क्लोज करूंगा. एंड सिंस इज द वीकेंड टाइम, लाइक न्यू ईयर वीकेंड है, तो हम बस यही चाहते हैं, लाइक इट विल बी ग्रेट इफ यू जस्ट मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ वन क्वेश्चन पर डे, लाइक GSG POTD. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ January, let's say at 7th of January, I will starting I'll resuming my playlist of teaching you. First of all, we'll start with the recursion. We will cover some basic topic of recursion, all the topics of recursion from basic to advanced, and then in that same playlist, we'll jump to the 450 question of recursions, right? So after that, after the recursion, we'll do the tree thing. After covering all the algorithms and the basics of trees, we'll jump to the 450 DSA question of trees. Similarly, we'll go for graph and DP, right? So we'll do that from the 7th of January. और आपके responses, like it crosses 300, 300 plus responses आ गए मुझे, so I'm very happy for that. तो ठीक है यार, we'll make this journey worthwhile. And if you are new to this channel, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो you can subscribe my channel, and so that I'll be also motivated from tomorrow to like make a new video for all of you guys. And this is my Instagram channel, the last thing that I made just specially for you guys, so that we can connect 24/7 for any doubts or guidance you want. तो ठीक है, मिलते हैं कल के स्ट्रीक के day 68 में, और तब तक के लिए अपना बाय बाय, ख्याल रखो और बस पढ़ते रहो यार. बाय.